All right. EER model stands for enhanced ER model, or someone may call it as extended ER model. Okay. Uh, the concepts that we are not able to show with ER model, वही concept हम double ER model से दिखाते हैं. Okay. So double ER model में specialization का एक part आता है और generalization का एक part आता है जो हमने last time देखा. But last time का जो notation था, that notation was not as per double ER diagram. It was as per ER diagram. Okay. So I will just show you what is the notation for double ER diagram. Maybe we can consider the same example फॉर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का जो एग्जांपल हमने लिया था वो सेम एग्जांपल्स कंसीडर कर सकते हैं. हम्म. कंस्ट्रेंट्स और स्पेशलाइजेशन करते हैं इसके. All right, this is the notation for specialization in double ER diagram. Okay, so nowadays, I mean, general trend is when we talk about specialization, we generally talk about double ER diagram. Okay, there is, I mean, अभी तक I mean, very rare question जहाँ पे ER diagram with specialization पूछा है. Okay, so whenever generally, I mean, by default ऐसा assumption होता है when we talk about double ER diagram or when we talk about specialization, it is vice versa. Okay, so जब भी question आएगा कि write a short note on double ER diagram or write a short note on specialization and generalization, you will be writing this notation only. Okay, ये जो सर्कल है, ये सर्कल को बोला जाता है स्पेशलाइजेशन सर्कल. दिस सर्कल इज कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन सर्कल. यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन दिखाते हैं. Inside this circle, we generally write D or we write O. D stands for disjoint and O stands for overlapping. O stands for overlapping. All right. Now this is again a specialization जहाँ पे employee is super class and these are all subclasses. बाकी सब कुछ same है. सिर्फ instead of triangle we use circle. We use circle so that we can show uh, constraints. जो हमने last time question लिखा था शायद से. Describe constraints on double ER diagram. So constraints अगर describe करना है तो we need this kind of notation only जहाँ पे disjoint or overlapping is also one of the constraint. Okay. So constraint या फिर double ER diagram जब हम देखते हैं तब we generally talk about specialization generalization with this notation and not the triangle वाला notation. Okay. But if you refer some of the material, if you refer, I mean, some YouTube videos, you might come across a notation that we used last time, triangle. Okay. It is always advisable to use this notation. Circle का notation use करना ही advisable होता है. यहाँ पे हम D लिख सकते हैं या फिर O लिख सकते हैं, disjoint या overlapping. Alright, अभी ध्यान देना यहाँ पे एम्प्लॉय इज अ सुपर क्लास और अ जनरल क्लास. ये हमने लास्ट टाइम बनाया था. दिस इज द वे वी रीड दिस एज अ स्पेशलाइजेशन एंड दिस इज द वे वी रीड जनरलाइजेशन. ओके, so employee is a super class or it is general class. Doctor, nurse, receptionist are all subclasses or we can say special classes. Doctor is a special class or subclass with its own special attributes or local attributes. ये कर सकते हैं. Okay, now let's talk about constant. इतना समझा ये notation? Okay, same, almost similar diagram with a notation as circle. Okay, double ER diagram. जब हमको constraints दिखाने होते हैं, I mean, it is mandatory that we use this notation only because इसमें constraint दिखाए जा सकते हैं directly in the diagram itself. Okay, all right. So now let's talk about constraint. Draw this diagram पहले. Double ER diagram heading दो. Enhanced ER model और extended ER model.
enhanced ER model or extended ER model. थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाओ because we have to describe constraints also. ऐसे तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाओ because यहाँ पे हम बहुत कुछ ऐड करने वाले डायग्राम में और कुछ. Let's write constraints. There are some primary constraints. Some primary constraints are attribute defined, then there is a predicate defined and user defined. These are some primary constraints. Okay, so let's talk about every constraint one by one. जरा अच्छे से समझ के लेते हैं हर एक कंस्ट्रेंट को. Attribute defined, predicate defined और user defined. इसमें से user defined is not so important because it is really based on the need. So attribute defined, predicate defined. पहले समझ के लेते हैं. Predicate का मतलब होता है condition. Predicate means any condition. Okay. So let's talk about predicate defined. So if I say ये स्पेशलाइजेशन में से दिस इज अ सुपर क्लास, ये सब मैंने बनाया नहीं यहाँ पे, लास्ट टाइम बनाया था ट्रायंगल वाले डायग्राम में. इट इज अ सुपर क्लास एंड दीज आर ऑल सब क्लासेस और जनरल क्लास एंड स्पेशल क्लासेस. अगर मुझे प्रेडिकेट डिफाइन स्पेशलाइजेशन करना है आई विल हैव टू राइट सम कंडीशन. ओके, जैसे सपोज मैं बोलूं एम्प्लॉय, ये स्पेशलाइजेशन में से मुझे सारे नर्स एम्प्लॉयज निकाल के दो. सारे नर्स एम्प्लॉयज अगर निकाल के दो ऐसा मैंने बोला तो दैट वुड बी प्रेडिकेट डिफाइंड. बिकॉज मैंने कंडीशन दिया कि जॉब टाइप इज इक्वल टू नर्स होना चाहिए. नाउ व्हाट इज जॉब टाइप शुड बी द एट्रीब्यूट. सो ये एम्प्लॉय के जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, जैसे एक हो सकता है एम्प्लॉय आईडी, देन देयर कैन बी अ सैलरी, देन देयर कैन बी जॉब टाइप एंड सो ऑन. सो इसमें से एक एट्रीब्यूट होना चाहिए जॉब टाइप सो दैट आई कैन अप्लाई कंडीशंस लाइक job type is equal to doctor, job type equal to nurse, job type equal to receptionist. That means I am talking about one particular subclass, not all subclasses. Okay, this is called as predicate defined constraint. Attribute defined constraint. Attribute defined constraint मतलब पूरा specialization अगर मैं एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे कर रहा हूँ, पूरा स्पेशलाइजेशन अगर मैं एक एट्रीब्यूट के बेसिस पे कर रहा हूँ, देन दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग एट्रीब्यूट एंड सच स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट डिफाइंड स्पेशलाइजेशन. यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया मैंने? जॉब टाइप, है ना. सो एम्प्लॉय का जॉब टाइप मैंने यूज किया है सो दैट
जॉब टाइप इक्वल टू डॉक्टर यहाँ पे आएंगे, जॉब टाइप इक्वल टू नर्स यहाँ पे आएंगे, जॉब टाइप इक्वल टू रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे आएंगे। तो जो एट्रीब्यूट यूज करके स्पेशलाइजेशन किया जाता है वो एट्रीब्यूट ये सर्कल के बाजू में लिखते हैं। सो आई विल राइट हियर जॉब टाइप, and if I mention any attribute here as a specialization attribute or defining attribute, it must be present to the superclass. ओके, सो दो टाइप हमने पहले देखे प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स में। पहला होता है एट्रीब्यूट डिफाइंड एंड प्रेडिकेट डिफाइंड। प्रेडिकेट मतलब एनी कंडीशन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेडिकेट डिफाइंड, आई बेसिकली टॉक अबाउट अ कंडीशन दैट गिव्स मी वन पर्टिकुलर सब क्लास। ओके, प्रेडिकेट डिफाइंड से थोड़ा सा बड़ा क्लास है और बड़ा व्यू है एट्रीब्यूट डिफाइंड का। एट्रीब्यूट डिफाइंड डिफाइंस वन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट फॉर द एंटायर स्पेशलाइजेशन। ओके, सो पूरा स्पेशलाइजेशन जॉब टाइप या एट्रीब्यूट के बेसिस पे हमने किया है। okay? प्रेडिकेट डिफाइन किधर दिखाया जाता है स्पेशलाइजेशन में? इज हियर। ये जो यू जैसा सिंबल है, इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो यू का जो दो पॉइंटर्स है ऊपर का, दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स सुपर क्लास। तो अगर मैं कभी ऐसे एग्जाम में कभी सुपर क्लास नीचे ड्रॉ करके देंगे तुमको और सब क्लासेस ऊपर ड्रॉ करके देंगे, तो यू शुड बी उल्टा। ओके, सो नोटेशन शुड चेंज अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुपर क्लास ऊपर ही होना चाहिए, बट इट इज अ थंब रूल, मतलब दिखने में अच्छा लगता है, रीडेबिलिटी बढ़ता है। सो दैट इज द रीजन सुपर क्लास इज ड्रॉन जनरली अबव और ऑन टॉप, उसके नीचे सब क्लासेस। सो ये जो यू जैसा सिंबल बनाया मैंने, इसके बाजू में इसका प्रेडिकेट लिखते हैं। सो प्रेडिकेट यहाँ पे क्या लिखूं मैं? डॉक्टर। तो जॉब टाइप इज इक्वल टू डॉक्टर, जॉब टाइप इज इक्वल टू डॉक्टर, ये एक कंडीशन हो गया विच रिजल्ट्स इनटू ओनली दिस क्लास। जॉब टाइप इज इक्वल टू नर्स, ये एक कंडीशन हो गया विच रिजल्ट्स ओनली इनटू दिस सब क्लास। एंड जॉब टाइप इज इक्वल टू रिसेप्शनिस्ट, ये कंडीशन हो गया विच रिजल्ट्स इनटू दिस क्लास। कंडीशन मींस प्रेडिकेट, सो प्रेडिकेट डिफाइन एट्रीब्यूट हो गया। ओके, द थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का जस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। गिव मी द डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु आर मेल, age more than 45 and doctors. So am I really talking about all doctors here? No, I am talking about very small set or very specific set as per the need of the question or need of the user. So such predicates are called as, or such conditions are called as user defined constraints. ये बहुत ही कम यूज करते हैं, यूज जनरली नहीं किया जाता है, बट एज यू शुड नो। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। तो ये हमने लिखा है ऑलरेडी डी फॉर डिसजॉइंट, ओ फॉर ओवरलैपिंग। यहाँ पे अगर मैं डी लिखूं तो उसका मीनिंग है दिस क्लासिफिकेशन इज डन डिसजॉइंटली, दिस क्लासिफिकेशन इज डन डिसजॉइंटली। अगर मैं ओ लिखूं तो दिस क्लासिफिकेशन इज डन ओवरलैपिंगली। अभी मतलब क्या है, यहाँ पे तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं डी, एम्प्लॉय इज डिसजॉइंटली क्लासिफाइड एज डॉक्टर or nurse or receptionist. मतलब no doctor can be nurse, no doctor can be receptionist. Vice versa, no nurse can be doctor, no nurse can be receptionist, no receptionist can be nurse, nor doctor. Okay, is it really followed in every form of specialization? No. Suppose I give you example, employee is classified into engineer and manager. ओके, यहाँ पे डू यू रियली एग्री कि डॉक्टर्स नर्स नहीं हो सकते और नर्स रिसेप्शनिस्ट नहीं हो सकते? ऑब्वियसली, राइट। एक एग्जांपल, एम्प्लॉय इज क्लासिफाइड एज इंजीनियर और अ मैनेजर। डू यू नो सम इंजीनियर्स हु आर मैनेजर्स? यस। डू यू नो सम मैनेजर्स हु आर एक्चुअली इंजीनियर्स? यस। सो यहाँ पे डी लिखना ज्यादा अच्छा है कि ओ लिखना ज्यादा अच्छा है? ओ, because it is overlapping. So some engineers can be managers and vice versa. So it depends on exactly what case study you are dealing with. Okay. यहाँ पे इसलिए हम डी लिख रहे हैं because it is disjoint classification. हो सकता है तुम कोई केस स्टडी आगे करो उसमें ओवरलैपिंग होगा, दैट्स पॉसिबल। ओके, सपोज आई गिव यू एग्जांपल ऑफ व्हीकल इज क्लासिफाइड एज ट्रक एंड कार, डी और ओ। कैन एनी कार बिकम ट्रक? नो। तो बीच में डी आना चाहिए, डिसजॉइंट मतलब सेट में डिसजॉइंटनेस होना चाहिए। लास्ट वन इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इज ऑफ टू टाइप्स, टोटल पार्शियल। टोटल पार्टिसिपेशन मींस अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मेरे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का केस स्टडी है, तो हॉस्पिटल में इफ देयर आर 2000 एम्प्लॉइज, all 2000 employees are covered here. Okay, here 1000, then 500, 500.
ये तीन को छोड़ के बाकी कोई कैटेगरी के एम्प्लॉय नहीं है मेरे पास। अगर ऐसा है तो इट इज कॉल्ड एज टोटल पार्टिसिपेशन। ओके। पार्शियल पार्टिसिपेशन मतलब अगर जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल नहीं होगा तो इट इज ऑब्वियसली पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके। आई वुड गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज आई से स्टूडेंट्स appear for okay exam. Exam is one entity. Exam is specialized as sem 1 sem 2 sem 3 sem 4. Okay. So student participating in exam, uh, is it really total participation? सारे के सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम में? यस, राइट। स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल टेक्निकल स्पोर्ट्स इवेंट्स, पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, मतलब सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में पार्टिसिपेट करते ही है, एग्जाम में अपियर करते ही है। जितने स्टूडेंट्स ऑन कॉल है, ऑन रोल है, ऑल स्टूडेंट्स अपियर फॉर एग्जाम, राइट। मतलब जो सेट के इंस्टेंसेस है, ऑल 60, ऑल 150, 120, 180 जितने भी है, ऑल ऑफ देम अपियर फॉर एग्जाम। बट व्हेन इट कम्स टू एनी अदर एंटिटी जैसे स्पेशलाइज आई मीन कल्चरल टेक्निकल स्पोर्ट, हो सकता है देयर कैन बी सम स्टूडेंट्स हु मे नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दीज थ्री, राइट। अगर इसको पार्शियल पार्टिसिपेशन बनाना है इसको, तो देयर मस्ट बी सम एटलीस्ट वन एम्प्लॉय का क्लास जो यहाँ पे कवर्ड नहीं है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकता है, वार्ड बॉयज हो सकते हैं, क्लीनर्स हो सकते हैं, पॉसिबल। ओके, जो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। सो देयर कैन बी सम एम्प्लॉयज हु डू नॉट बिलोंग टू दिस और दिस, बट मे बी अ सिक्योरिटी गार्ड, पॉसिबल। ओके, या फिर मे बी ट्रस्टी, स्टिल नॉट कवर्ड हियर। ओके, और डायरेक्टर स्टिल नॉट कवर्ड हियर, पॉसिबल। ओके, सो अगर कोई पार्टिसिपेशन टोटल पार्टिसिपेशन है तो उसको दो लाइन से दिखाया जाता है। ये जो दो लाइंस है इसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। और सिंगल लाइन रहेगा तो ऑब्वियसली पार्शियल पार्टिसिपेशन। ओके, डी फॉर डिसजॉइंट, ओ फॉर ओवरलैपिंग। ये जो जॉब टाइप है, दिस इज द एट्रीब्यूट which gives attribute defined constraint, and this attribute is called as defining attribute. ये attribute को बोला जाता है defining attribute। defining defining attribute, ये इसको बोला जाता है defining predicate और defining condition। एक्चुअली कंडीशन कैसे लिखा जाता है मैं लिख के दिखा रहा हूँ। एक जॉब टाइप इक्वल टू डॉक्टर, ये जो पूरा लिखा है मैंने, दिस इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रेडिकेट। This is called as defining predicate. This is called as defining attribute. User defined तो मैंने एग्जांपल दिया ही नहीं है। डिसजॉइंट ओवरलैपिंग, डी लिखा रहेगा तो डिसजॉइंट, ओ लिखा रहेगा तो ओवरलैपिंग। टोटल पार्टिसिपेशन अगर दिखा रहा है तो यहाँ पे दो लाइन, पार्शियल पार्टिसिपेशन दिखा है तो जस्ट सिंगल लाइन। सिंगलर हम हमेशा जनरली ड्रॉ करते हैं, इसलिए आई हैव नॉट ड्रॉन इट सेपरेटली। ओके, समझा? ओके, सो गिव हेडिंग एज, ये तूने डायग्राम पहले बनाया था। ओके, नाउ गिव हेडिंग एज कंस्ट्रेंट्स इन स्पेशलाइजेशन स्लैश जनरलाइजेशन। Constraints in specialization slash generalization. Okay. Now understand, based on disjointness and participation, there can be total four possibilities. If I consider disjoint and participation together, यहाँ पे दो possibilities है, यहाँ पे दो possibilities है. So I can see there are four possibilities of constraints. Disjoint, total. Then disjoint, partial. Overlapping, total. And overlapping, partial. So ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं स्पेशलाइजेशन के। डिसजॉइंट, टोटल पार्शियल, ओवरलैपिंग, टोटल पार्शियल। ओके, जस्ट नोट लिखो नीचे एक नोट। कंसिडरिंग डिसजॉइंटनेस एंड पार्टिसिपेशन,
together, consider disjointness and participation together. There can be four possibilities of there can be four possibilities of specialization. Just mention these. There can be four possibilities of specialization. Disjoint total, disjoint partial, overlapping total, and overlapping partial. Okay. All right. Okay. Give next heading as aggregation. Give next heading as aggregation. चलो एग्रीगेशन क्या है समझ के लेते हैं. Aggregation is generally described when there is really a complicated kind of entities or relationships involved और हमको डायग्राम से दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. इन सच केसेस जनरली एग्रीगेशन इज यूज्ड. ओके. एग्रीगेशन का सिंपल आई मीन इंग्लिश लिटरेरी मीनिंग जो होता है एग्रीगेशन मतलब कुछ तो एक साथ करना. ओके. सो एग्रीगेटर्स, जो एग्रीगेटर्स यू मस्ट हैव हर्ड कि दीज आर सम एग्रीगेटर्स. सो एग्रीगेट और एग्रीगेशन का मतलब भी वही है. सो हियर स्टूडेंट performs a project where student is entity, project is also entity, associated by an association or a relationship performed. Okay. This entire process is guided by a faculty. Okay, that is a common phenomena observed in any student management system or university system. बट वो दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. अभी तक हम नॉर्मली दिखा रहे कि स्टूडेंट परफॉर्म्स प्रोजेक्ट, फैकल्टी गाइड्स प्रोजेक्ट. फैकल्टी डज नॉट गाइड अ प्रोजेक्ट, फैकल्टी गाइड्स द एंटायर प्रोसेस वेयर स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द प्रोजेक्ट. ओके. सो ऐसा फिनोमिना दिखाने के लिए we consider or we aggregate this entire thing
इनसाइड सिंगल एंटिटी, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, दैट इज वन सिंगल एंटिटी is associated with other entity called as faculty. ओके, सो ये जो है ये पूरा एक एंटिटी है, और वो एंटिटी को हम कोई दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में एसोसिएटेड है. ओके, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन. और ये जो बड़ा सा एंटिटी है, यानी बॉक्स बनाने का रीजन है, एंटिटी का नोटेशन है बॉक्स. सो ये जो बड़ा सा एंटिटी है, इट इज कॉल्ड एज एग्रीगेटेड एंटिटी. क्या चालू है? Mind you can leave or otherwise assume कि ईयरफोन में लगा मतलब